Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hassan Ashraf, and today we are going to represent our final presentation. The topic of our presentation is Carrot Hydro Project. So, starting के अंदर हम scope discuss करेंगे हमारे project का. The Carrot Hydro Project is a 720 megawatt run of a river project. Okay, that is built around Rawalpindi, Jhelum River. This is being developed by Carrot Company and a special company that is called China 3 Garages Company that hold majority shares. This project is a part of China-Pakistan Economic Initiative, and the total investment cost of this project is around 1.42 billion US dollars. The majority shareholder of this project is China, which hold around 60% share of the project. And after China, 20% of the shares are held by IMF, and rest of the shares are belong to government of Pakistan. China will going to take his share of 60% shares for the next 30 years, and after 30 years this project will be handed over to the government of Pakistan. After the scope हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट की मदद से की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फुलफिल हो सकती हैं. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉर्टफॉल है. Pakistan is facing electric crisis for many years, and the maximum total demand coming from residential and industrial estate are around 25,000 megawatt, and the transmission distribution capacity is settled at approximately 20,000 megawatt, 22,000 megawatt. So this lead to deficit of about 3,000 megawatt when the demand peaks. After the electrical shortfall, irrigation एक ऐसी चीज है जो कि पाकिस्तान की around 72% आबादी इस पे डिपेंड कर रही होती है. So 72% of Pakistan population is associated with agriculture and the main source of income. Irrigation system क्या देगा हमारे जो है हमारा एग्रीकल्चर का सिस्टम है उसको इरिगेशन सिस्टम क्या देगा? A system of supplying water to land by means of artificial canal and ditches to promote the growth of crops. So Pakistan possesses the world largest cognation irrigation system, commonly called Indian Basin Irrigation System, and this irrigation system consists of 3 major canals that are Sarbela, Mangala and Chashma canals. So what are the objective of this whole project? So we'll be discussing the PMBOK methods which can be used on this project. So there are around 8 methodologies listed here, but we have used only work breakdown structure methodology for the construction of this dam. Work breakdown structure क्या होता है? Work breakdown structure बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर एक जो बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है हमारा, जैसे एक डैम का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम जो अपने बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क है इसको छोटे छोटे मेन टास्क के अंदर डिवाइड करते हैं ताकि जो इसको इजीली मैनेज किया जा सके. यूजुअली द प्रोजेक्ट मैनेजर यूज दिस मेथड टू सिंप्लीफाई द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. In work breakdown structure, much larger tasks are break down to manageable chunks of work. Those chunks are easily suppressed and estimated. So Mr. Sajid will be explaining what are the objective and why we use the work breakdown structure. Sajid bhai, over to you. Thank you so much, Hassan. This is Sajid Abbas. You can also call me Ismail, and I'm a civil engineer. So now I'm going to take further from work WBS, which is known as a work breakdown structure. So इस project को हमने different categories में divide किया है. So the reason of dividing the project is we can construct the project in smaller parts, so which will be easy and handleable tasks as well. So the first one what we had is inlet and outlet. The second one is of course the divergent tunnels, and third one is turbine structure, powerhouse site, turbine basin, and turbine tunnels as well, headrest tunnels, and dams and controlling gates as well. Those are the major structures what we have been divided in different structures. So now we are going to discuss individually, which is going to be inlet and outlet.
So this is in inlet and outlet tunnels. So basically the major purpose of inlet and outlet tunnels are to convert the river from their original way, so where we can provide an alternate way, so जहाँ से हम पानी को डाइवर्ट कर सकें और डैम कंस्ट्रक्शन के लिए हम स्ट्रक्चर तामीर कर सकें. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हम डैम को कंस्ट्रक्शन करने से पहले इस चीज की हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, डाइवर्जन टनल्स की, विच इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डैम. और अभी हम जाते हैं सेकंड, द सेकंड पार्ट व्हाट वी हैव इज this is tunnels, which is those are the same thing like divergent tunnels. So what we mentioned there, so how we are constructing, the way of constructing is सबसे पहले हम इसको drill करके explode करते हैं rock को, then we are installing the steel bars, and then again we are doing a concrete. उसके बाद फिर हम finishing करते हैं, उसके बाद फिर हम पानी को divert करते हैं tunnels के through. तो हमारा second point है अगला. हसन, next page please. So which is turbine structure? So this is one of a very important part in the structure, जिसका सारा प्रेशर जो है डैम पानी ऊपर से नीचे को जब फ्लो करता है तो सारा प्रेशर इसी के ऊपर बिल्डअप होता है. सो इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ऑफ कोर्स उन सारी चीज़ों का टेक केयर करना होता है, जिसमें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, मटेरियल्स हम जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हमें ख्याल रखना होता है. और उसमें जहाँ पे हम टरबाइन को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, हमारा प्रोजेक्ट उतना ही लॉन्ग टर्म उसकी लाइफ होगी. सो दिस इज वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द हाइड्रो पावर. सो द नेक्स्ट पेज व्हाट वी हैव इज turbine tunnels. So those are not like divergent tunnels. Divergent tunnels हम सिर्फ टेम्परेरली यूज करते हैं जब तक हमारा डैम कंस्ट्रक्शन नहीं होता. जो ही हमारा डैम कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वी आर गोइंग टू ब्लॉक द डाइवर्जन टनल्स एंड वी आर गोइंग टू ऑपरेट द टरबाइन टनल्स, जहां से हम पानी लेके आते हैं और नीचे टरबाइन तक पानी को सप्लाई कर देता है. तो इनमें पानी का फ्लो, पानी का प्रेशर, सारा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो इस वजह से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा जो जितने भी PMBOK हमें रूल्स कहता है मैनेजमेंट से रिलेटेड और इंजीनियरिंग जितने भी रूल्स होते हैं, वो सारे इसमें जो है क्रिटिकली और बहुत ही सख्ती से हमने इसको फॉलो करना होता है. और स्पेशली टनल कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हम काम करते हैं कि जैसे PMBOK हमें कहता है कि PPEs जो है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो है, वो सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है. जैसे मास्क हो गया, हेलमेट हो गया, शूज़, ये सारी चीज़ें हमने जो है ना एट अ टाइम यूज करनी है. फिर हमने जो है ना टनल के अंदर हमने एक्सेस करनी होती है. सो अगला जो हमारा पार्ट है वो नेक्स्ट पेज हसन प्लीज. टरबाइन बेसन, ये this is the end way, we can say this is the end part where we are going to install the turbine, जहाँ पे पानी प्रेशर से आके टरबाइन को रोटेट करेगा एंड आफ्टर द रोटेशन ऑफ द टरबाइन, जो कि मोटर को रोटेट करेगा, देन द इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेट. सो इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी स्टील बार्स हैं उन सब की जो है ना टेस्टिंग वगैरह की जाती है और उसमें सारी चीज़ों को देख के फिर हमने अप्रूवल देनी होती है कंस्ट्रक्शन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. सो अगला हमारा जो पार्ट है जिसको हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है हेडरेस्ट टनल्स. हेडरेस्ट टनल्स ये वही टनल्स है जिनको जो स्पिल वे से लेके, यानी कि टॉप ऑफ द डैम से लेके बॉटम ऑफ द डैम यानी कि पावर हाउस सेक्शन तक जो हम टनल को कंस्ट्रक्शन करते होते हैं, वो होता है हेडरेस्ट टनल्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डैम स्ट्रक्चर. तो इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए भी सेम प्रोसीजर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें प्रोसीजर को थोड़ा सा जो है ना हार्डली इसको मॉनिटर किया जाता है. सारे मैनेजमेंट जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं, जिसमें ड्रिलिंग के बाद फिर प्राइमरी सपोर्ट दिया जाता है, टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है, उसके बाद फिर स्टील बार्स लगा के कंक्रीटिंग की जाती है. देन वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द हेडरेस्ट टनल्स. और हमारा अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पेज हसन प्लीज, कंट्रोलिंग गेट्स. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हर जो है ना कंस्ट्रक्शन का हर पार्ट इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन ये भी दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द हाइड्रो पावर.
जो कि जो पानी का फ्लो है हेडरेस्ट टनल में उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसके स्ट्रक्चर के लिए कंक्रीट तो ऑफ कोर्स हम करते ही करते हैं। उसके बाद अगला जो है कंक्रीट से हट के इसमें हम स्पेशल स्टील इस्तेमाल करते हैं जो पानी को कंट्रोल करता है, अकॉर्डिंग टू टरबाइन नीड पानी को आगे ट्रांसफर कर रहा होता है। सो इसके बाद अगला हमारा पार्ट है जो हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन किया है, वो है पावर हाउस साइट। ये अभी डिस्कस करेंगी इफ्रा। इफ्रा प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू साजिद। ओके, हमारे पास पावर हाउस है तो इसका मेन पर्पज ही हमने डैम के लिए इसको बिल्ड करना होता है। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एवैल्यूएशन सबसे लो होता है, और उसके बाद अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पावर हाउस में क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम फॉलो अप करते हैं सेफ्टी, इन्वायरमेंटल और हेल्थ रूल्स वगैरह को। हसन अगला। हसन। उसके बाद हमारे पास डैम साइड आ जाते हैं जिसको जिसके हम सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग वॉल जिसमें हम बिल्ड करते हैं, और इसमें हमारे पास फैक्टर एंड सेफ्टी भी आ जाता है जिसे हम सेफ्टी फैक्टर भी कहते हैं, जिसमें हाउ मच स्ट्रॉन्गर सिस्टम इज देन इज इंटर नीड टू बी एन इंटीग्रेटेड लोड। और उसके बाद हमारे पास हसन आगे। उसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, जो मोस्ट डिफिकल्ट पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी ऑफ अप्लाई द वर्क इनटू द प्रैक्टिकल वर्क। और इसमें हमारे पास जो हैंडल करने वाली चीजें होती हैं वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम फर्स्ट, एंड सेकंड टॉप लेवल मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट में हमारे पास सुपरवाइजर आ जाते हैं, सेकंड में हमारे पास वापडा और मैनेजर आ जाते हैं, थर्ड में हमारे पास इंजीनियर वगैरह आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट रिस्क एंड मॉनिटरिंग टीम आ जाती है, टीम अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वर्क स्ट्रेटजी आ जाती है, उसके बाद टेस्ट एंड मटेरियल इक्विपमेंट आ जाते हैं जिसके हम अंदर उसको हम वेरीफाई करते हैं और फिर उनको टेस्ट करते हैं और फिर यूज करते हैं। हसन आगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है शॉर्टेज स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर इज बेस्ट फॉर एंड लार्जर रिसोर्सेज होती है, नेचुरल रिसोर्सेज जिसके अंदर 3% हमारे पास फ्रेश वाटर होता है, और द मेन वाटर सोर्सेज इज फॉर ओवर 2 बिलियन pupil for aquifer। और उसके बाद ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर आर मेल्टिंग वेरी क्विकली विच इज अलार्मिंग। और इन 2010 अंडरग्राउंड वाटर टेबल is underground water table is 400 feet and now is more important than 600 feet। और उसके बाद टाइम टू स्टोर वाटर यूजिंग फॉर डैम एंड बैरेज। और एग्रीकल्चर सेक्टर गजल इज 70% ऑफ द वाटर एनुअल कंजप्शन। और 215 mark at the end of the decade the action by the UN on promoting water and sanitation issue। Thank you। At the end of this project, we have a electric shortfall. So as we have discussed earlier, Pakistan electric sector is facing the worst crisis in the history. It is settled with an overloaded infrastructure with the sizable capacity shortfall and is marred by unpresentable load shedding and excessive transmission and disruption losses and a massive circular debt. So the main requirement of power is of Pakistan is around 25,000 megawatt. So right now we have overcome on the crisis of electricity, and we are doing really great, and we have now available power is around 21,000 megawatt. So now the shortfall is around 4,000 megawatt. Pakistan is using fuel to cover the shortfall, which is the most expensive power. So Carrot is providing 72 megawatt to Punjab, which is cheap and long-term power plant, which is very cheaper than the fuel consumption. So it is a really natural project, which is very natural due to its site and its location. So that is it. This was our presentation on the Carrot Hydro project, and that's it. Thank you so much.